Hey guys, good morning. So a quick update for the day that we'll be leaving now. It's 8:30 a.m. So from here we'll go to Manali, Mal Road. We'll report there. Before that we'll have our breakfast. So after that there might be some briefing going on, and then we'll head to Jobra. Jobra is around 15 kilometers from Manali. It will take around 1 hour by car. So from there our trek starts. Our destination for the day is Chika. It is around 3 kilometers from Jobra. So yeah, last night that Manali had like a huge rainfall, like between 12 to 3. It rained heavily, but today the sky have cleared up a bit. We could see the snow-cladded mountains from here. That was not visible yesterday. So yeah, we are hoping for a good weather, and I hope that it will be a lovely trek. Hi everyone, we have reached Jobra. The car took us almost 1 hour. There's 42 rounds of the whole mountain. We have finally reached Jobra. From here it's a 2-kilometer trek to Chika, which is the first campsite for today. The plan is to reach there first and have a lunch and take rest for day 2. But here the view is very amazing. Awaited for the start of the trek. I would say enjoy the view. नेक्स्ट के टाइम पे ग्रुप को बना दें, बट लंच के लिए मैंने ऊपर बोल दिया है आपको। जैसे आप पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले लंच दिया जाएगा। देन चिका में आपका स्टे रहेगा। नेक्स्ट डे निकलेंगे हम चिका टू बालूका गेरा। वो अराउंड 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है। मिनिमम 5 to 6 आवर्स आपको लगेंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए, और स्टे रहेगा बालूका गेरा में। एंड नेक्स्ट डे हम वहाँ से निकलेंगे बालूका गेरा टू समिट, एंड समिट टू बालूका गेरा रिटर्न। ठीक है, हम दूसरी साइड नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा रिस्की पैच है ना। स्नो बहुत ज़्यादा है, आपको आइडिया आ जाएगा जैसे आप बालूका गेरा में पहुँच रहे हो। ठीक है, तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा क्यों रिस्की है। ठीक है, नीचे का स्लोप 90 डिग्री का है, वहाँ पे स्नो के पैचेस बने, ग्लेशियर अगर वो टूट गया तो काफ़ी रिस्की है। ठीक है, आपके ट्रैक में जो आपके शेड्यूल में हम कुछ भी स्किप नहीं कराएंगे, आपका चंद्रताल भी कराएंगे। ठीक है, बट हम जाएंगे बालूका गेरा टू टॉप एंड टॉप टू रिटर्न बालूका गेरा। डन, बालूका गेरा में हम स्टे करेंगे एंड नेक्स्ट डे मूव करेंगे हम बालूका गेरा टू चिका। ठीक है, और चिका में आपका लास्ट नाइट का स्टे रहेगा। ठीक है, चिका से हम डे जो आपका 5वां दिन है, मॉर्निंग शार्प 5 o'clock मूव करेंगे। 7 बजे तक आप लोगों को यहाँ पे पहुँचना है। यहाँ पे गाड़ियाँ लगी होगी। 7 बजे हम यहाँ से बैठ के जाएंगे चंद्रताल, एंड शाम को आपको ड्रॉप करेंगे मनाली माल, जहाँ से हमने आपको चंद्रताल बाय कार करेंगे। डन, क्लियर शेड्यूल से। क्योंकि हाँ, कुछ लोगों का जल्दी है, वो मैं बता दूंगा आप लोगों का हो जाएगा बालूका गेरा टू। और यहाँ से शुरू होता है हमारा डे 1 का ट्रैक। चोपड़ा से चिका का डिस्टेंस लगभग 5-6 किलोमीटर है, दैट कैन बी कवर्ड इन 3 hours। For first half an hour, there is a comfortable climb through the forest. Once you complete it, you reach the meadows, and the beauty of Hamda Valley opens up in front of you.
From here you go downhill to cross the river named Rani Nala, and once you cross the river, you start ascending again to your destination for the day, Chika campsite. Hey guys, good morning. So today we'll be trekking to Balugagera from Chika. Yesterday we reached Chika at around 4 p.m. but after that I couldn't record anything because it was raining heavily. It rained for 14-15 hours, and at times it was pouring. So last night we were really struggling. So today we'll start the trek and then we will see once we reach the river crossings and everything, then only we'll get to know what is the condition there, how much the water level has increased, and depending on that we'll it will be decided that whether we will be able to reach Balugagera or not. But I hope we will be able to. The weather is still gloomy, but yeah, this has stopped raining for last couple of hours. But I have never seen this. I have been to the Asar Marsa trek last year and it was a monsoon trek, but it's pouring like 14-15 hours. At times we are really scary that the water will wash away the tents and all. So yeah, the water actually leaked into the tent at times, but somehow we managed.